of the Ministry of External Affairs. At the outset, let me mention, as you would have realized, we are not in our usual location in New Delhi, but at this beautiful all of you. city of Indore. Thank you for joining us for this special media briefing of the Ministry of External Affairs. And to give us a At the sense outset, of what actually let happened me over the mention, last as 3 you would have days realized, and what we have been able to pick up and engage with various participants. We have a distinguished panel here on the dais. We have been able to pick up and engage with various participants. We have a distinguished panel here and we have been able to pick up and engage with various participants. We have a distinguished that we have organized in partnership with the government of Madhya Pradesh. Also joining us here from the Ministry of External Affairs, Shri Saurabh Kumar, Secretary East in the Ministry of External Affairs, as well as Madam Manika Jain, Additional Secretary Overseas Indian Affairs in the Ministry of External Affairs. We are particularly happy that Shri Mohammad Sulaiman, Additional Chief Secretary of the Government of Madhya Pradesh, is also on the dais with us. We are particularly happy that Shri Mohammad Sulaiman, Without further ado, may I now Additional hand Chief over Secretary the of the floor Government to of Madhya Dr. Pradesh, is Asaf also on the to dais give with us a us. sense of We are what this particularly joint happy event that just concluded. Shri Mohammad Sulaiman. Without further Good afternoon and namaste all of you. We welcome you again here for this special press briefing. I'm very happy to share with you that moments earlier we have successfully concluded the 17th Pravasi Bharatiya Divas Convention, and there were many things packed in this convention. There were elements which are regular elements, but there were also many new elements which were built into this. As you were aware that we had gone with the theme of Diaspora, reliable partners for India's progress in Amrit Kaal for this PBD Convention, with the sole objective of connecting deeply with our diaspora and in different parts. And we have also focused on this PBD on two things. One, how the overseas diaspora had contributed for our freedom struggle. So for that, you would have by now seen, I believe, that first ever digital exhibition which had been mounted on Azadi Ka Amrit Mahotsav, contribution of diaspora in Indian freedom struggle, and also as a underlying the importance of safe, legal and orderly migration, our focus which has been then of our government, we also requested the Prime Minister who released this commemorative stamp on Surakshit Jaye, Parakshit Jaye. So these were there. But then some of the elements which I was talking about is that we had 5 plenary sessions, and this is the first time we have that all these sessions were headed by cabinet ministers, 4 by the cabinet ministers, 1 by Minister of State, holding charge for culture. And then we had several other ministers from various countries partnering. So we had overwhelming response to these plenary discussions, went off very well. All the panelists contributed well, and there were interactive sessions from the diaspora. And again, we saw that a beautiful trade fair exhibition has been mounted by, industrial exhibition mounted by the government of Madhya Pradesh, and also a cultural corridor parallel running to it. People were very much happy with the hospitality extended by the people of Indore, government of Madhya Pradesh, and specifically all those officials who are working in Indore. Particularly, there was great appreciation for the cuisine, different kinds of local cuisine which was organized. So this was again something people have given us a feedback about. While talking about something unique, this year again we had for the first time from UAE, we had a delegation of 200 students who had come from all school students from UAE. This is again the first time we tried to have children come and experience this thing, which was which we liked very much, their interaction and their interest. We also had 100 blue collar workers from the country also join, because after all, at the end of the day, all these deliberations are also how we make things simpler for our workforce who are going in different countries in search of newer opportunities. So this is again, this is the first time which was there. We had, of course, big delegations, official delegations from Guyana, Suriname, and also Mauritius, one of the biggest delegations. We had
ministerial delegations from Malaysia, Panama, Zimbabwe, and so on and so forth. So in all, we had 3 days of intense discussions, and all the cabinet ministers also made it a point that they met the diaspora group separately. All those cabinet ministers who chaired these sessions also had separate sessions with the diaspora belonging to different countries, US, UK, UAE, Qatar, Kuwait. So in those separate meetings, which were of course not telecast, or it was not open to public, but people had got an opportunity for the first hand to discuss their issues with the ministers concerned. So this was again something unique inbuilt into this PBD, that they were firstly, the number of cabinet ministers were the highest ever this time, and each of these cabinet ministers, as I mentioned, had very, very fruitful discussions, closed door discussions with the Pravasi friends. Also, as part of on the sidelines of the PBD, Honorable Prime Minister of India as well as Honorable Rashtrapati Ji had bilateral discussions with the 2 visiting dignitaries, the presidents of Guyana and and Suriname. So to brief you more on that, I would like to pass on to my colleague, Saurabh Kumar, Secretary East from the Ministry of External Affairs. नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमारे मित्र और सेक्रेटरी सीपीबी औसफ सईद ने आपसे अभी बताया कि इस भारतीय प्रवासी दिवस के अंतर्गत 2 राष्ट्रपति गयाना और सूरिनाम से आए थे और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। प्रेसिडेंट संतोकी, जो कि सूरिनाम के राष्ट्रपति हैं 2002 से, उनको पिछले प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 2021 में हुआ था, वो चीफ गेस्ट थे उसमें, और उनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया था। प्रधानमंत्री ने, क्योंकि वो वीडियो मीडियम से हुआ था, तो प्रधानमंत्री जी ने उनको इस इन पर्सन दिवस के लिए बुलाया। वो काफ़ी इच्छुक थे भारत आने के लिए। इस बार के जो चीफ गेस्ट थे वो थे गयाना के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इरफान अली जी। जैसा कि आपने उनका स्पीच भी सुनी होगी, वो भारत और गयाना के जो संबंध हैं उनको और डीप, उनको और घनिष्ठ बनाना चाहते हैं, और इन संबंधों के बारे में मैं थोड़ा सा बोलूँगा। प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी की, इन दोनों राष्ट्रपति प्रेसिडेंट संतोकी और प्रेसिडेंट इरफान अली जी के साथ बायलैटरल मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री जी की मीटिंग कल थी, राष्ट्रपति जी की मीटिंग आज हुई उनके साथ। प्रधानमंत्री जी की जो मीटिंग थी दोनों राष्ट्रपतियों के साथ आधे घंटे की थी, लेकिन दोनों मीटिंग में इतना सब्सटैंटिव डिस्कशन हुआ कि वो आधे घंटे से ज़्यादा समय मीटिंग चली। गयाना के जो राष्ट्रपति थे इरफान अली जी, वो लगभग 1 घंटे की मीटिंग हो गई थी, और संतोकी जी के साथ भी जो मीटिंग थी वो लगभग 45 मिनट की मीटिंग थी। पनामा की जो विदेश मंत्री हैं वो भी आई थी, और संतोकी जी के साथ जो सूरिनाम के विदेश मंत्री हैं वो भी यहाँ पे थे, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर जी, उनकी सेपरेटली इन विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई, और उन्होंने गयाना और सूरिनाम के जो राष्ट्रपति हैं उन पे भी कॉल ऑन किया था। मलेशिया के भी एक मंत्री ह्यूमन रिसोर्स के यहाँ पे आए हुए हैं, उनके साथ सेपरेटली डॉक्टर जयशंकर जी की मीटिंग हुई थी, और मलेशिया के साथ मंत्री जी के साथ कम्युनिटी भी थी, तो उनके साथ भी दोनों मंत्रियों का आपस में इंटरैक्शन हुआ था। तो
बाकी और भी, हाँ, मॉरिशस से भी काफ़ी मंत्री आए हुए थे, अरिंदम जी हमें बता रहे हैं, तो उनके साथ भी वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर जी का इंटरैक्शन हुआ था। जितने भी विदेश से डेलीगेशंस आई हुई हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर मेड इट अ पॉइंट टू इंटरैक्ट विद देम, गेट देयर इनपुट्स एंड फीडबैक. Now let me just focus on the interactions which took place between the Prime Minister and our President, and President Santokhi and President Irfan Ali. So let me just give you a little background about our bilateral relationship. Guyana, as you all would be knowing, has 40% Indian origin population. President Irfan Ali has been at the helm from 2020 onwards. Guyana has had very significant finds of oil and gas. ऑयल और गैस की जो डिस्कवरीज वहाँ पे अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले हुई हैं, और 2-3 साल पहले से उनका प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है. इस समय उनका 3.4 लाख बैरल्स पर डे गयाना का प्रोडक्शन है, और इनके एस्टिमेट्स हैं कि ये डेकेड के एंड तक ये प्रोडक्शन 1.64 मिलियन बैरल्स पर डे का तक का हो जाएगा. तो गयाना in future would be a major production center for hydrocarbons. क्योंकि ये रिसोर्सेज मिले हैं, गयाना इस समय तैयारी कर रहा है अपने ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, और इसके अंतर्गत वो चाहते हैं कि भारत की जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वो गयाना में ज़्यादा पार्ट ले, और वहाँ की जो प्रगति हो रही है, वहाँ का जो डेवलपमेंट और ग्रोथ प्रोसेस है, उसमें भागीदार हो. ये मेन मैसेज गयाना के राष्ट्रपति का था. उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ 25 मेंबर बिजनेस डेलीगेशन आया है, which is the largest business delegation Guyana has ever sent to India. And I would just mention a little bit more about this conversation, but let me just very briefly also mention about Suriname. Suriname के राष्ट्रपति यहाँ पे आए हैं, उनके साथ हमारी बहुत अच्छी डेवलपमेंटल कोऑपरेशन है. सूरिनाम इस समय जो है वो थोड़ा सा आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है, तो हमारा जो क्रेडिट था, लाइंस ऑफ क्रेडिट जो उन्हें वापस करना था, जो डेट है उसको ही वो रिस्ट्रक्चरिंग चाहते थे. तो प्रधानमंत्री जी के साथ जो वार्तालाप हुई उसमें हम लोग ये अग्रीमेंट रीच कर गए कि उनका जो डेट है वो रिस्ट्रक्चर किया जाएगा. और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था सूरिनाम के साथ कि सूरिनाम इस वर्ष भारत मूल के जो लोग वहाँ पे गए हैं उनका 150वां एनिवर्सरी इस साल मनाएगा. तो वो बहुत इच्छुक थे कि भारत से लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करें और हाई लेवल डेलीगेशन वहाँ पे जाए, और वो प्रधानमंत्री को इनवाइट उन्होंने इसके लिए किया है. और जब राष्ट्रपति जी के साथ मीटिंग हुई तो राष्ट्रपति जी को भी इसके लिए इनवाइट किया है. तो ओवरऑल जो डिस्कशंस हुए हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, राष्ट्रपति जी के साथ, बहुत अच्छे डिस्कशन हुए हैं. वार्मथ थी वहाँ पे, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी. इरफान अली जी ने प्रधानमंत्री जी को बताया, राष्ट्रपति जी से भी वो बोले कि इंडिया की तरफ वो लोग देखते हैं लीडरशिप के लिए. प्रधानमंत्री जी से प्रेसिडेंट इरफान अली बोले कि उनका जो लीडरशिप है वो बहुत एडमायर किया जाता है, भारत में तो किया ही जाता है, लेकिन जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं लैटिन अमेरिका में एंड कैरेबियन में, वो भी जो लीडरशिप है उससे प्रेरित होते हैं. और जो वैल्यू सिस्टम है प्रधानमंत्री जी का और उनकी लीडरशिप का, उससे वो भी वहाँ पे इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं और उसको वहाँ पे फॉलो करने की कोशिश करते हैं.
सेक्टर्स जो थे गयाना के संदर्भ में, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे वो बनाने का उनका प्लान्स हैं, उसके लिए बातचीत हुई। आईटी सेक्टर में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में देश को आगे ले जाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, इस तरीके से अनेक सेक्टर्स हैं जिसमें वो हमारा पार्टिसिपेशन चाहते हैं। जो कि इंदौर से और मध्य प्रदेश से लगे मुद्दे हैं, तो ये दोनों ही राष्ट्रपति आपकी जो इन्वेस्ट एमपी समिट होएगी उसमें भाग लेंगे, उसके इनॉग्रल सेशन में भाग लेंगे। मैंने आपको बोला नहीं था, लेकिन सूरीनाम में भी ऑयल एंड गैस के डिपॉजिट्स होने की संभावना है। एक्सप्लोरेशन स्टेज पे अभी काम चल रहा है और कुछ साल में प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो दोनों ही राष्ट्रपति सूरीनाम के और गयाना के, वो जो आपका हाइड्रोकार्बन का जो सेक्टर होएगा इन्वेस्ट एमपी कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट इस एरिया में है। इंदौर के सिवा ये दूसरे शहर भी जाएंगे और वहाँ भी इनकी दोनों राष्ट्रपति की मीटिंग्स लाइंड अप हैं। और जैसा कि मैंने बोला है कि बिजनेस और चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ भी इंटरैक्शन होएगा। तो मैं यहाँ पे अब समाप्त करता हूँ, बाद में अगर कुछ प्रश्न होंगे तो उसका मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। Thank you very much, sir. May I now request Suleiman sir to share his perspective from the MP government's perspective on this big event that we just concluded. सभी साथियों, आई वुड जस्ट से कि हम लोगों को मध्य प्रदेश के लिए पहली बार ये हमको अवसर मिला। भारत सरकार ने कहा कि वो स्टेट को पार्टनर बनाना चाहते हैं अपने इस फ्लैगशिप इवेंट के लिए, जो 17th टाइम इंडिया में हो रही थी। पहली बार मध्य प्रदेश को अवसर मिला। व्यक्तिगत रूप से मैं अपना कहूँ तो मुझे भी पहली बार अवसर मिला कि मैं फॉरेन सर्विस के अपने 2 बैचमेट्स के साथ काम कर सकूं। नॉर्मली एकेडमी के बाद आदमी मिलता नहीं है, तो मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। हम लोग की इंदौर हमेशा से स्ट्रेंथ रही है, उसी स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम लोगों ने इसमें पार्टनरशिप करने में अपनी सहमति दी और कोशिश करी कि हम अपना जो फ्लेक्सिब इवेंट होता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसके साथ इसको लाइन अप कर सकें। अभी सेक्रेटरी बता रहे थे कि जो विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी शामिल हैं। उसमें लगभग 27 देशों के लोग आगे और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी जो लोग आए थे उनसे भी मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे ध्यान दिया कि हम कितने लोगों से अपने बायलैटरल रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कृपापूर्वक हमको आधे दिन का स्टेट सेमिनार करने का अवसर भी दिया और उसमें हमने 6 सेशन किए, 3-3 करके 2 पैरेलल सेशन, आधे दिन का अवसर उन्होंने हमें दिया। तो हमने बहुत सारे एनआरआईज के साथ उसमें इंटरेक्ट किया। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो स्टेट सेमिनार थे उस सभी में जो राज्य के मंत्रीगण थे वो उपस्थित रहे। ना केवल वो अपने सेमिनार में पार्टिसिपेट किए बल्कि बाद में भी उन्होंने इंडिविजुअल मीटिंग बहुत सारे लोगों से करी। हेल्थ मिनिस्टर साहब, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने जो मेडिकल के क्षेत्र में मीटिंग करी उसमें बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन था, ख़ासतौर से उन लोगों का जो इंदौर से और भोपाल से मेडिसिन की पढ़ाई करके बाहर अमेरिका में गए हुए हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट पे उन्होंने कोऑपरेशन का एश्योरेंस दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी, उन्होंने ये कहा कि वो जो टीचिंग है मेडिकल कॉलेजेस में उसमें वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से स्पेशलिस्ट टीचिंग का काम वो लोग कर सकते हैं। जो लोग मुख्यमंत्री जी के साथ मिले, लगभग हमने 28 मीटिंग मुख्यमंत्री जी की अलग अलग डेलीगेशंस के साथ ऑर्गेनाइज करी। उसमें सभी तरह के प्रपोजल मिले, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी थे, जो कल्चरल एक्सचेंज से रिलेटेड भी थे, जो पार्टनरशिप से रिलेटेड भी थे। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने रुचि दिखाई। मुझे लगता है कि हमारे साथ हम लोग के लिए ये पहला एक्सपीरियंस था और ये एक्सपीरियंस को सफल करने में जितना योगदान इंदौर ने दिया वो अपने आप में मुझे लगता है कि भारत सरकार के हर व्यक्ति ने उसको सराहा कि इंदौर ने बहुत एक्टिवली इस काम को सपोर्ट किया। हमारे फ्रेंड्स ऑफ एमपी के चैप्टर्स हैं 12 देशों में, जिनके माध्यम से हमने मोबिलाइज करने की कोशिश की। जब हम लोग इस बात की शुरुआत कर रहे थे तो पार्टिसिपेशन के जो एक्सपेक्टेशन थे फ्रेंड्स ऑफ एमपी के चैप्टर्स के एक्टिव कोऑपरेशन से, उसमें बहुत ज़्यादा
अच्छा सहयोग हमको मिला बहुत सारे कंट्रीज से। मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए अपने फाइनल वक्तव्य में उसको फ्रेंड्स ऑफ एमपी की व्यवस्था को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात भी कही कि हम उनसे लगातार अपना संवाद कैसे कर सकें, और साथ में ये कमिटमेंट भी किया कि जैसे एक बार हमने पहले किया है, हम मध्य प्रदेश के एनआरआईज का हर 2 साल में एक सम्मेलन यहाँ किया करेंगे और उसमें कुछ लोग जो विशिष्ट काम कर रहे हैं उनको अवार्ड भी करेंगे। सो मुझे लगता है कि इंदौर के परिश्रम के कारण मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, और जो अपॉर्चुनिटी भारत सरकार ने हमें दी है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। Thank you, sir. Thank you very much. We'll now open the floor for questions. I'm seeing a lot of new friends, a lot of new faces, some from Delhi. So the ground rules, please. Please introduce yourself and the organization that you represent before you take the floor, and please raise your hand when you want to ask the question. I saw one lady here, but since he also raised his hand, let me start with you. Yes, sir. Please go ahead. एक मिनट, माइक्रोफोन आपके पास आएगी तब आप बात करें। This is Praveen Sharma from Hello Hindustan. I just want to know कि टोटल प्रिसाइज रजिस्ट्रेशन कितना हुआ था और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, और दूसरा क्या विदेश मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री घाना में और सुरीनाम में वही संभावना देखता है जो अमेरिका गल्फ में ऑयल और गैस के लिए कर रहा है, उनका शोधन करना और निकालना दोनों के लिए? May I also request one question per person? We'll never finish otherwise, but I'm just noted your question. Yes, ma'am. Microphone. One second. सभी आदरणीयों को प्रणाम करती हूँ। मैं मनीषा प्रभात किरण से, सिटी चीफ। मैं आस्क क्वेश्चन सर? Yeah, please go ahead. The floor is yours. सभी आदरणीयों को सवाल सिर्फ एक ही है कि हम भारत में, हमारे भारत में तो बहुत सारी संभावनाएं, हर सेक्टर में संभावनाएं, दूसरे सेक्टर्स हो। सर जो दूसरे डेलीगेट्स आए हैं जैसे गयाना या सूरीनाम के आए, हम इनसे क्या रह सकते हैं सर, और इस पूरी जो समिट हुई है उसमें हम कितने आउटपुट की उम्मीद रख रहे हैं सर? मेरा सवाल ये था। Thank you. I saw one hand that side. Okay, please go ahead if you have. नमस्कार, मैं अरविंद तिवारी, डीजीएनए न्यूज से। मेरा सवाल सौरभ सर ये था कि कल प्राइम मिनिस्टर ने स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो क्या गयाना, सूरीनाम या दूसरी कंट्रीज के साथ स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में कोई बातचीत हुई है या इस सेक्टर में भारत अपना काम आगे बढ़ाएगा? Before him, you had your hand up, please. I'll come back to you, please. सर मैं आदित्य श्रीवास्तव हूँ, डीडी न्यूज से। वैक्सीन नीति पर काफ़ी चीज़ें जिस तरीके से भारत ने कोरोना काल में काम किया, दोनों राष्ट्रपति प्रमुखों ने भी उस पर चर्चा की। भारत ने जो छवि दुनिया भर में एक डेवलप की है, खासकर वैक्सीन नीति से कहीं ना कहीं बड़ी है, क्या ये माने? I'll take one more question before. Yes, please go ahead. सर मेरा सवाल है कि संजय गुप्ता हूँ, मैं दासूत्र न्यूज़ का ब्यूरो चीफ। मेरा सवाल है कि ब्रेन ड्रेन की बात होती रही है, अब ब्रेन गेन की बात हो रही है। ये सभी मिनिस्टर्स ने भी कहा है, पीएम साहब का भी यही है कि ब्रेन गेन होना चाहिए। तो क्या हम राइट ट्रैक पे हैं? उसके लिए क्या स्पेशल हमारी पॉलिसी है कि ब्रेन ग्रेन हो? हम प्रवासी भारतीयों क्यों, हमारे भारतीय अब उसको आगे बढ़े और ब्रेन ड्रेन नहीं हो? राइट ट्रैक पे हैं, उसके लिए क्या? So maybe we'll take this round of these 4-5 questions, and then we'll take another round. क्यों हमारे भारतीय? Yeah, absolutely. So whichever ones you want to take, sir, and then rest we'll distribute. लगभग 70 देशों से लोग यहाँ पर आए और ये रजिस्ट्रेशन स्पेसिफिक नंबर आपको इस वक्त देना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन भारत से भी हुए, बाहर से भी हुए, लेकिन जो हम लोग जिस पहले जब तैयारी कर रहे थे इंदौर के लिए, तो हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे कई ज़्यादा हमने पार्टिसिपेशन देखा, लोगों का एंथुजियाज्म देखा, और जो नंबर ऑफ कंट्रीज भी जितनी आई यहाँ इंदौर में, और बहुत सारे लोग हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऐसे थे कि जो पहली दफ़ा आए तो ये, और मुझे लगता है चूँकि पैंडेमिक के बाद 4 साल के ब्रेक के बाद ये खुला द ट्रांसपोर्टेशन। Baki, some of the things on the bilateral between the thing my colleague will answer.
लेकिन यकीनन स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया गया, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। इस पे आज मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन ने भी इस पे काफ़ी बातचीत की। कई जो पार्टिसिपेंट्स थे जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर पार्टिसिपेट किए, उन्होंने भी अपने अपने जो है एक्सपीरियंसेस बताए और सुझाव दिए कि किस तरह से स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग को हम लोग बेहतर बना सकते हैं, इन्वॉल्विंग state of art institutions in India, which we are, as the Ministry of External Affairs, we are collaborating very closely with the Ministry of Skill Development as well as the state governments. One of our key programs in this is called the Videsh Sampark, where it is a state outreach program where the Consular Passport Visa CPV division under me, we reach out to various state governments, talk to them about the opportunities available in different countries, and then what are the various skilling requirements and the skill mapping of jobs available. That is a major assessment which we do. So it is a kind of a hand-holding and an exercise which involves different agencies, Ministry of External Affairs, Ministry of Skill Development, and state government and several public sectors. So I'll pass on. I'll just add to the skill development part which somebody asked. So Saudi Arab के group से Chief Minister साहब के interaction में there were very positive discussion on this. They said they want to have a PPP arrangement with the government of Madhya Pradesh, जिसमें हम अपने ITIs और पॉलिटेक्निक के साथ उनको लिंक कर सकें. उसमें वो आइडेंटिफाइड कोर्सेज पे अपनी डिज़ाइन करके ट्रेनिंग चाहते हैं और उनको साथ में एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात उन्होंने की है. एंड चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको पॉजिटिवली लिया है. We have started the process of formally signing an MOU with them. Skill जो हमारा स्किल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो उनके साथ टच में है. Yeah, also I think you asked about when we are doing this PBD and carrying out various sessions, what are we aiming at or what are we gaining at? Now, as I said, this 5 major plenary sessions which were done, the topics were carefully chosen. Starting from youth and and how the youth could be involved and engaged in our mainstream development in India, and then soft diplomacy, women, and workforce and healthcare. So in each of these sessions, the participants who were again chosen from different parts geographically and different specializations within the field of the theme of the plenary, they gave first of all they gave their own examples and in their own fields of activity which we're doing, and also gave some very useful suggestions how they could kind of contribute. And likewise, some of the participants, let's say there was one participant who was specializing in semiconductor industry and how semiconductor industry could be utilized in renewable energy as well as in healthcare. So these kinds of path-breaking technologies which they are dealing with or which they are very comfortably working with abroad, there was this there was this clear inclination on the part of the participants to give back. So that is where the question that when we are talking about brain drain to brain gain, so the government is now providing various ways and various policies, various mechanisms by which people, especially in the scientific field and educational field, could come back to the country, not perhaps for a longer period, but even for shorter durations where they can do joint research, joint publications, exchange of students, exchange of faculties. So there are various possibilities which we have been discussing. Some programs are already publicized and known, but then there are various new programs which we are planning. Prime Minister is very keen to engage very closely with the diaspora and also with the various academic institutions of higher learning globally, where our Indian diaspora members are doing either research or teaching. So this is something which we are closely working at. So I'll pass on to Mr. Saurabh Kumar. प्रवीण जी, आपने पूछा था ऑयल एंड गैस के बारे में. गयाना और कुछ हद तक सूरेनाम भी ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन हम इन देशों की तरफ देख रहे हैं, पर्टिकुलरली गयाना की तरफ. दिल्ली में राष्ट्रपति जी की गयाना के राष्ट्रपति जी की
मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस उन पे कॉल ऑन करेंगे और हमारे PSUs के साथ उनकी मीटिंग भी है। फिकी एक इवेंट, बिजनेस इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करेगा। Manisha ji, I think to a certain extent, you also mentioned what do we get back. He answered in the general context, but specific to Guyana and Myanmar, Guyana and Suriname, oil and gas sector is a major sector for cooperation amongst others. Skill development, I think, was asked about, and my colleague has already answered. But again, in the bilateral context, skill development is something which the president of Guyana is very keen on. He also wants a skilled Indian manpower to visit, to be there in Guyana and contribute to the development of the country. And capacity building is already a very integral part of our bilateral cooperation with both these countries. Aditya, आपने वैक्सीन मैत्री के बारे में पूछा था। आपने दोनों राष्ट्रपति गयाना के और सूरीनाम के जिन्होंने जब बोला था, पर्टिकुलरली गयाना के राष्ट्रपति ने उनकी अपनी ओपन स्पीच में उन्होंने बोला था, आभार व्यक्त किया था कि भारत ने उनको वैक्सीन्स दी जिस समय उन्हें वैक्सीन्स कहीं और से नहीं मिल रही थी। और ये जो सेंटिमेंट था जब वो प्रधानमंत्री जी से मिले और राष्ट्रपति जी से भी जब आज मिले, दोनों से उन्होंने ये सेंटिमेंट एक्सप्रेस किया और भारत को इसके लिए धन्यवाद दिया। संजय जी ने भी पूछा था ब्रेन गेन के बारे में, बट इसका आई थिंक आंसर हो गया है। आपका प्रश्न था, पूछिए। एक मिनट, हाँ सॉरी, आप पूछना चाहते हैं? जी नहीं, जी, रुकिए, कुछ लिस्ट में। हाँ जी जी, मेरा नाम कुमार राकेश है, मैं ग्लोबल गवर्नेंस ग्रुप दिल्ली से हूँ। सवाल दो हैं, लेकिन छोटे से सवाल हैं। एक सर, मतलब समाहित है उसी में, व्यवस्था का सवाल भी है, सवाल भी। फटाफट जी जी प्लीज, आपने पहले बताया तो मैं थोड़ा उसको, जी जी प्लीज। एक तो सवाल है, मैं करीब 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, 3 को छोड़ करके करीब मैंने 12-13 कवर किए हैं, सबको फॉलो भी किया है। तो एक सवाल मुझे आज तक जवाब नहीं मिल पाया है, मैं उस जवाब का तलाश कर रहा हूँ। सिंगल विंडो सिस्टम फॉर अवर प्रवासी भारतीय, उसका कब कैसे क्या हुआ निदान। एक साथ साथ दूसरी व्यवस्था है कि हमारी MEA जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो व्यवस्था थी यहाँ पे पत्रकारों के लिए और लोगों के लिए, मेरी खबर के अनुसार उसको पुष्ट करेंगे सुलेमान साहब, क्या उसको साइड लाइन करके स्थानीय प्रशासन के लोगों ने टेक ओवर किया, जिसका हश्र, जिसका खमियाजा कल लोगों ने देखा। करीब 800 से ज्यादा प्रवासी जो आए थे रजिस्ट्रेशन करा के, उनको बाहर रहना पड़ा और लोकल लोग अंदर थे। कौन थे, क्या थे, इस पे सुलेमान साहब प्रकाश डालेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने माफी मांगी सार्वजनिक रूप से, लेकिन इसका कारण क्या था और क्यों हुआ ऐसा? आपने दोनों प्रश्न का कहा था समावेश है, मुझे तो कोई लिंक नहीं लगा, बट आपने पूछा है तो मैं कोशिश करूंगा। आपका माइक्रोफोन आएगा तब आप, बिना माइक्रोफोन की आवाज नहीं आती हमारे सिस्टम में। माइक्रोफोन हियर प्लीज, हु हैज द सेकंड माइक्रोफोन? या प्लीज सर, इन दोनों देशों से खासकर रोजगार और निवेश का को लेकर कितनी संभावना है सर दोनों देशों से? कोई टेंटेटिव फिगर हो या इस तरह से? मैं सर सिद्धार्थ हूँ, ETV इनाडू टीवी से। रोजगार और नमस्कार सर, मैं दीपक हूँ, IBC 24 न्यूज चैनल से। इस बार के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में होम स्टे को काफी बढ़ावा दिया गया था, जिसे एक नाम दिया गया था पधारो हमारे घर। तो पुराने प्रवासी भारतीय सम्मेलन से इस बार के इस प्रवासी भारतीय में सम्मेलन में जो नई यूनिक चीज आई थी, इसको लेकर कैसा देख रहे हैं विदेश मंत्री? ये जो होम मतलब घर के बाहर रहने में, हाँ, होम स्टे के लिए पधारो। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे आपका एक प्रश्न। No, one second. Let him first and then come to. Sir, I'm Akhilesh Suman from Sansad TV. It is a mammoth task indeed.
But do you have any database of all the Indian diaspora and NRIs who are living abroad? And since we expect their contribution in our, development, and so is there any system mechanism you have created or you are going to create as a follow-up so that they can give their feedback, they can contribute on that basis? You had a question? हेलो प्लीज गो अहेड। सर, मैं जितेंद्र यादव, नई दुनिया दैनिक जागरण ग्रुप से हूँ। सर, प्रवासी भारतीयों की 2-3 समस्याएं उन्होंने अभी विदेश मंत्री से भी शायद डिस्कशन किया था। एक तो ये कि दोहरी नागरिकता को लेकर अभी तक कोई उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं। दूसरा सर, वो अपने बच्चों को भारत में पढ़ाना चाहते हैं तो एनआरआई सीट बढ़ाने की प्लस उसमें फीस में छूट देने की मांग कर रहे हैं। तीसरा, उनके बूढ़े माँ बाप जो भारत में तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं उनको बड़ी मुश्किल आती है यहाँ इंडिया में उनको तीर्थ यात्रा कराने में, क्योंकि वो शायद वीज़ा और बाकी कुछ समस्याएं हैं। मुझे पता नहीं वो किस तरह की समस्या है, वो टेक्निकली आप समझ पाएंगे, बता पाएंगे उसको। नहीं, मैं ये मान नहीं चाहूंगा कि इंडियन वीजा पाने में इतनी दिक्कतें होती है, बट मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ, वो उन्होंने ये बात रखी है उनके सामने, तो ये आप भी शायद समझ पाएंगे उसको कि क्या मुश्किल है, वो टेक्निकल शायद कोई मुश्किल है। तो 2-3 सवाल है उनकी समस्या है। ओके, we are running out of time. I'll take a couple of questions and close it perhaps. Okay, आपने हाथ उठाया था पहले, and I'll take the mic. Sir, one of my question is asked by Jitendra. I was also waiting. Then we'll pass on. Yes. No, sir. My question is that during the interaction with the NRIs, they suggested that the venue of the PBD should be declared earlier, so that they can plan it rather in well organized way. I want your experience. You will introduce yourself, sir. Manish Upadhyay from Free Press Journal. And yeah, Meghna, right. Sir, Meghna Dev from DD News. Sir, we also spoke at the curtain raiser press conference of PBD. Can you elaborate more on India's Caribbean outreach? How have the bilaterals, India's Caribbean nation outreach, how have the bilaterals gone, especially in terms when we were talking about the focus will be on energy and food security? Sorry, I think it came in late. I think you gave a detailed description. I'll come back to you on that. There's one more hand I turned down. Is a lady around? No, you? Okay. Yeah, there's a lady here. You want to ask a question? Yeah, go ahead, ma'am. सर, मैं शीतल रॉय हूँ, संपादक को धनगणना। मैं जानना चाह रही थी कि हमारे जैसे इंदौर में या भारत में जो प्रवासी सम्मेलन होते हैं और इन्वेस्टर मीट जैसी होती हैं, जब इन्वेस्ट के लिए जब कंपनियां आती हैं उसके बाद जो प्रोसेस होता है, इस डिपार्टमेंट की एनओसी, उसकी एनओसी, ये सारे जो सिस्टम से होकर गुजरता है, तो फाइनली कहीं ना कहीं उसको निराशा होती है। तो उसकी बाद में जो प्रोसेस होता है उससे उनके निराकरण के लिए, क्योंकि जब बाहर से कोई आता है इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि इंडिया के लोग अगर कुछ डालना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो कुमार राकेश जी भी पूछ रहे थे ना, सिंगल विंडो सिस्टम। आप कुछ पूछ रहे थे? And we will close here. I can't take any more questions. I think there's no more questions. Rajesh Joel from Agniban. So we should close with this. Myself Rajesh Joel from Agniban. इंदौर का चयन विदेश मंत्रालय ने किया, भारत सरकार ने किया। विदेश मंत्रालय का ओवरऑल एक्सपीरियंस इंदौर को लेकर क्या रहा, किस प्रकार की बहनवाजी, और जो थोड़े बहुत गलतियां हुई, जो थोड़े कल त्रुटियां रही, जो कुछ वीडियो वायरल्स हुए, तो उसको लेकर थोड़ा सा क्या लेसन भी रहेगा, ताकि इस प्रकार की स्थिति आगे वाले सम्मेलन में नहीं हो, वो कोई एक्शन भी लोगी क्या इस पे? Thank you. Sir, we'll quickly go through some of these questions. Which one? Okay, I think काफी questions हैं, तो हम लोग अपने सब्जेक्ट के हिसाब से we will try and give you the thing. हाँ, बिल्कुल, हमारे मित्रों को फ्लाइट भी पकड़नी है, तो otherwise he will have to stay one more day, you know. तो एक तो सिंगल विंडो का आपने एक क्वेश्चन किया कि जितने प्रवासी 12-13 आपने अटेंड किए हैं, और जब ये मिनिस्ट्री बनी थी ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, उसके बाद फिर इसका मर्जर हो गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो विद इन द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री द OIA 2 डिवीजन इज द नोडल डिवीजन विच लुक्स आफ्टर दिस। नाउ जितने PBDs हुए हैं उसमें ज़्यादातर PBDs हुए हैं दिल्ली में, 7 या 8 हुए, उसके बाद बड़े बड़े सिटीज़ में। तो उसके एक थॉट प्रोसेस ये रही सरकार में कि जो प्रवासी भारतीय लोग हैं उनको दूसरे भारत के मुख्तलिफ जो सिटीज़ है उनका भी जो है एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसीलिए
ये पार्टनरशिप स्कीम स्टार्ट की गई ताकि मुख्तलिफ स्टेट से हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, पीबीडी के लिए भी करते हैं, और जो हमारे डिविजन्स जो पीबीडी प्रवासियों के लिए जो स्पेशलाइज प्रोग्राम रखती है, जैसे नो इंडिया प्रोग्राम यूथ का प्रोग्राम है, उसमें भी जो है स्टेट की पार्टनरशिप के हिसाब से ही काम होता है। तो दिस इज अ वन गुड एक्सपेरिमेंटेशन, जिसमें आप देखें कि यहाँ भी जो लोग इंदौर देखने आए, वो एक आध जो आपने कहा जो सेकेंड डे थोड़ा सा लोगों को उत्साह था कि प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली देखे, उसके अलावा आप देखें कि सारे के सारे दे आर ऑल गोइंग विद वेरी पॉजिटिव impressions of Indore. Our last question आपने भी उसके बारे में पूछा, तो स्पेशली दे वर वेरी वेरी प्लीज्ड के यहाँ का कल्चर बड़ा वाइब्रेंट कल्चर है, कुजीन और बहुत सारी चीज़ें उनको देखने के लिए, दे एक्चुअली मेनी ऑफ देम डिडंट नो कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ देखने की है और उसके लिए कितना समय चाहिए। तो यकीनन बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये एक बर्ड्स आई व्यू मिल गया, लेकिन आएंगे ज़रूर दोबारा और रीडिस्कवर करेंगे। सो दैट हैज़ बीन दी ओवरऑल द इम्प्रेशन ऑफ द NRIs ऑन दैट। एंड ऑफ कोर्स ये जो होम स्टे वाला है, ऑफ कोर्स आवर फ्रेंड विल सुलेमान जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विल टॉक अबाउट दिस, बट हमको भी जो फीडबैक विद इन द वेन्यू ये मिला है कि दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत सारे लोग होम स्टे में रहने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, एंड दे फाउंड दिस एक्सपेरिमेंटेशन वेरी यूनिक, क्योंकि आते ही जो जिस तरह से उनका स्वागत हुआ और उसके बाद जो घरों में लेकर गए और घरों में जो उनको जिस तरह से ट्रीटमेंट हुआ, इट वाज अ वेरी वेरी यूनिक दिस थिंग। सो आई थिंक इंदौर शहर का, मध्य प्रदेश एज अ स्टेट, ये सारे इस इवेंट से आई थिंक it has raised the profile and it has raised the image of the local people as a very hospitable and nice and kind people. Of course, when you organize a big event like this, there are always challenges of various kinds, but then I am very happy to tell you that it was a very good partnership with the state government. Mr. Mohammed Suleiman was the key person from the state of Madhya Pradesh, but not only he, but the entire local administration was very much part of this, and they were not doing it as a duty. It was all at any point of time. You could see hundreds of them spending their time and other things. Even the people, you could just see the welcome which they were giving. So I think we should ignore one or two small things which are there. When a big organization, even आप घर में भी एक दावत करते हैं 50 लोगों की, 100 लोगों की, कितना आपको टेंशन हो जाता है, उसमें भी पॉसिबिलिटी होती है. लेकिन it's a big event, there is always a little challenge here and there. But if you look at the overall picture, I would always give it 100 on 100 because of the overall thing, impression which the event had achieved and the objectives which we achieved. So I think I must have finished. You have talked about Akhilesh, you have talked about the database. Now database is a very tricky issue, क्योंकि होता यह है कि आप कानूनी तौर पे किसी भी डेटाबेस को रख नहीं सकते. Although we have the global रिश्ता portal which has now been launched, अभी कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ है, उसमें तकरीबन 35-36 हज़ार के करीब लोगों ने रजिस्टर किया है. We normally encourage the प्रवासीज to register voluntarily. क्योंकि उससे फायदा क्या होता है, आप देखिए यूक्रेन में देखा आपने, कुछ और भी जगह, उससे पहले वंदे भारत मिशन में देखा. अगर रजिस्ट्रेशन हो तो हमें पता चलता है कि कौन लोग कहाँ पर है, और किसी भी इमरजेंसी में फॉर अस टू गिव बेटर सर्विस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली अगर कंट्री बड़ा है और उसमें बहुत सारे शहर हैं, तो अपने भारतीय वासी हर जगह है, काम कर रहे हैं, स्पेशली इन द गल्फ. तो अगर डेटा सही नहीं हो तो हमको रीच आउट करने में मुश्किल होती. सो आवर अप्रोच हैज बीन mainly to get the data voluntarily, and this is also one of the things which we are talking about when we are looking at revamping the immigration bill and other things. So how best we could encourage, should we link this with some incentives like insurance scheme, other things, so that people come forward to register. So ये सारी चीजें जो है, but at the end of the day it is basically the people who have to register. In this case, some of the organizations, Pravasi organizations, do help us. Thank you. Okay. Meghna, let me very quickly, I think you came in late, I spoke extensively on it, but let me sum up for you. We attach a lot of importance to our Caribbean outreach. Prime Minister have meetings. There was appreciation of the Prime Minister's leadership
and it was conveyed that Caribbean region and the Latin American region would like to engage more with India, and some discussions in this context also took place. Somebody asked about employment and investment. Definitely, employment and investment were part of the discussion. Investment or employment बातचीत में आए, और ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की संभावना है, और जो गयाना का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे उसके लिए स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होगी, और वो एक गेटवे हमारे लिए खोलता है, और इसमें काफी बातचीत अभी कंसर्न मिनिस्ट्रीज के साथ भी होगी। और ये जैसे ये अरिंदम बोल रहे हैं डिजिटली नहीं, डिजिटल, एग्रो, फूड प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सेक्टर्स में वार्तालाप हुई। और गयाना के राष्ट्रपति आपका जो यहाँ पे इंदौर में इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे भी गए, और उसके बारे में राष्ट्रपति जी से जब दोपहर में मिले थे तो उसके बारे में बता रहे थे कि उनके डिस्कशंस जो कंपनीज के साथ हुए बहुत अच्छे हुए हैं। No, about होम स्टे, इट वाज माय अंडरस्टैंडिंग इज कि किसी पीबीडी में पहली बार होम स्टे को प्रयोग के तौर पे किया गया। बहुत सारे लोगों ने होम स्टे का ऑफर किया, उसमें से कुछ लोग को तरीके से सेलेक्ट भी किया गया कि किन के यहाँ होम स्टे कराया जा सकेगा। और जिन लोगों ने होम स्टे कराया उन्होंने लिटरली मतलब हर कुछ किया, अपने घरों में पुताई से लेके चॉइस ऑफ फूड से लेके एयरपोर्ट से रिसेप्शन से लेके बहुत कुछ उन्होंने किया। जो लोग होम स्टे में रहे वो होटल से कहीं ज़्यादा सुखी स्थिति में थे। मुझे यकीन है कि होम स्टे का ये एक्सपेरिमेंट जितना सक्सेसफुल रहा है, पीबीडी के अगले चरणों में भी शायद इसका उपयोग होता रहेगा। वैसे तो औसफ साहब ने बता दिया अबाउट द क्वेश्चन दैट द जेंटलमैन रेज देयर, बट आई वुड जस्ट ट्राई एंड मॉडिफाई। देखिए क्या है कि लेट्स नॉट से दिस के इंदौरी अंदर थे और एनआरआई बाहर थे। इंदौरियों ने बहुत काम किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको दोष मत दीजिए। दोष कुछ था तो आप हमको दे सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन शायद 3000 से ज्यादा था और हॉल की कैपेसिटी 2200 थी। जब उनको कहा गया कि जहां ऊपर टीवी, हमको पहले से पता था कि कुछ लोगों के लिए टीवी लगाना पड़ेगा, लोगों का उत्साह होता है, उन्होंने कहा टीवी पे देखना होता तो यहाँ क्यों आते। तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को दिक्कत होती है, असुविधा होती है, बट आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि इसका दोष किसी तरह से किसी इंदौरी का नहीं है। जो कमी थी वो हमारी तरफ थी। इंदौरियों ने तो बहुत मेहनत से अपना काम किया है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। बिफोर क्लोजिंग, एक आपने जितेंद्र जी पूछा था कि डुअल सिटीजनशिप, स्टूडेंट्स इन इंडिया, फीस, ओल्ड पेरेंट्स की बात कर रहे थे। देखिए, दिस इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी क्वेश्चन आंसर सेशन, दीज आर इश्यूज, इसमें डिस्कशंस चल रही हैं, आप जैसे जानते हैं, एंड दीज आर इश्यूज द मिनिस्ट्री एंड एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर अवेयर, एंड दिस इज नॉट समथिंग कि इमीडिएटली सॉल्व हो सकते हैं। पर आपने एक और नया मुद्दा कहा, मैं नोट कर लिया है। सिमिलरली हर इवेंट में हम सीखते हैं, जैसे किसी ने सजेशन दिया था कि वेन्यू ऑफ पीबीडी अर्ली डिसाइड कर लें, नोटेड, बट कुछ हमारी भी मजबूरियां होती हैं, सिचुएशन चेंज होते हैं। आप देख रहे हैं कोविड के हाल पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। So let me end on that note. What Suleiman sir also said, and our secretaries also said, that it's been a great event. There have been one event maybe, but there were some difficulties. But on the whole, if you ask somebody, why don't you ask people? Ask them the response. Sir, please. एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब when you had so much gathering and we had taken all precautions relating to COVID in anticipation, there were ambulances, there were testing facilities and everything, but touch wood, we didn't have any major, health related emergency, major medical emergency. There was one incident of some minor medical thing which was immediately attended to by the local doctors. So I think that all goes to show the micromanagement which has gone into planning this event and to make it a success in Indore. I would once again reiterate that we got full support from the administration, local administration, government of Madhya Pradesh, doctors of Indore, and the municipal administration. So because of that, as we are speaking today,
we are, declaring this event as a very successful event in all respects. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you for all for joining us today evening. May I now thank Dr. Asaf Said, Saurabh Kumar sir, Mohammad Salman sir, and Manika for being here. And before I end, can I just say thank you very much from our side, from XP Division side, to our partners in the Public Relations Department of the Government of Madhya Pradesh, Raghavendra ji and team, and all of you for making this part success. Thank you. Good evening. माननीय राष्ट्रपति महोदया पधार रही हैं। हम हृदय से अभिनंदन करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। बहुत बहुत स्वागत है माननीय। We extend a very warm and hearty welcome to the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. और अब राष्ट्रगान होगा। We extend a very hearty and warm welcome to Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. His Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana, and His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname. We also extend a very warm welcome to Honorable Governor of Madhya Pradesh, Shri Bangubhai Patel, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan, Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar, Honorable Minister of Civil Aviation, Shri Jyotiraditya Scindia, and Honorable Minister of State for External Affairs, Shri V. Muralidharan. कार्यक्रम की शुरुआत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता से कर रही हूँ, जो प्रवासी भारतीय दिवस के जन्मदाता थे। ये कविता आप सभी को समर्पित है। विदेश में देश की शान बनाई,
विदेश में देश की शान बनाई भारत की पहचान, सदा हमारे दिल में बसते कैसे कहे मेहमान। देवी माता अहिल्याबाई के आशीर्वाद से आज भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया स्वयं अपनी शुभकामनाओं के साथ पधारी हैं स्वच्छता के सिरमौर इंदौर में। I now request Honorable Minister of External Affairs Dr. S. Jaishankar to kindly address the august gathering and give the welcome remarks. Honorable President of India, His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana, His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, President of Suriname, Honorable Governor Shri Mangubai Patel ji, Honorable Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan ji, Minister of Civil Aviation, Shri Jyotiraditya Scindia ji, Minister of State, Shri Muralidharan ji, my diaspora brothers and sisters, friends. It gives me great pleasure to commence the valedictory session of the 17th Pravasi Bharatiya Divas in the august presence of the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. I am grateful to the Honorable President for gracing the occasion and agreeing to confer the Pravasi Bharatiya Samman Awards. Her presence this day means so much to all of us. We deeply appreciate the presence of His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana, who's been the chief guest of this convention. I thank His Excellency Shri Chandrika Prasad Santokhi ji, President of Suriname, for his distinguished presence at this event. Friends, representing the best of Indian talent and creativity in foreign lands, our diaspora has demonstrated exceptional qualities of dedication, commitment, and perseverance in many fields. Their contributions, achievements, and successes have earned them an enviable reputation in their respective societies. They are not only harbingers of change in their own worlds, but regarded as an authentic connection to that in India. Each of them has done us proud, and the awards being presented today are a reflection of that sentiment. From the discussion during this convention, it is clear that the global demand for Indian talent, skills, products, services, and practices will only increase with time. So too will mobility and migration, facilitated by the initiatives that the Modi government is taking with various partners. All this will only make the Pravasi Bharatiya Divas more meaningful and salient in the coming years. This convention takes place as we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav and enter the Amrit Kaal. It is time to recognize the sacrifices and achievements of the past, even as we prepare for the ambitions of the future. The digital exhibition at this venue was an endeavor in that regard. The Youth PBD was similarly an effort to capture the optimism of the coming generations. Prime Minister Narendra Modi's address gave us the vision and guidance for the journey that we embark on. And the Council of the Presidents of Guyana and Suriname and the warm sentiments that they expressed convey the good wishes of our family abroad in this regard.
5 union ministers and 3 ministers of state have also spared their valuable time to interact with our overseas brothers and sisters. And Chief Minister Shivraj Singh Chauhan ji and his team have been truly effective partners in making this convention so successful. The valedictory session today is a culmination of the 3-day Pravasi Bharatiya Divas Convention. The Pravasi Bharatiya Samman Award, to be conferred by the Honorable President of India, is the highest honor given to overseas Indians. Since 2003, a total of 269 such Pravasi Bharatiya Samman Awards have been conferred. Today's award ceremony aims to recognize the achievements of 27 such remarkable persons from our diaspora and acknowledge their successes. I join you all in congratulating them and cherishing this opportunity to reaffirm that for India, the world is indeed one family. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मध्य प्रदेश की गौरव माटी के ही बेटे हैं और जन सेवा से पूर्ण निष्ठा से जुड़े हुए हैं. We now request the Honorable Minister of Civil Aviation श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी to kindly address us. हमारे इस मंच पर विराजमान भारत की राष्ट्रपति महामहिम परम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आज इस मंच पर हमारे साथ विराजमान गायना के राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली साहब, सूरीनाम के हमारे राष्ट्रपति महोदय आदरणीय चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल साहब, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, देश के यशस्वी विदेश मंत्री आदरणीय जयशंकर साहेब जी, विदेश राज्य मंत्री आदरणीय मुरलीधरन साहेब और हमारे सामने बैठे हुए भारत के अंतर्राष्ट्रीय जगत में चमकते हुए हमारे सभी नवरत्न हमारे प्रवासी भारतीयों को मैं झुककर प्रणाम करता हूं। आज इस मंच पर हम भारत के राष्ट्रपति महोदया, गायना के राष्ट्रपति महोदया, सूरीनाम के राष्ट्रपति महोदय और आप सबका मध्य प्रदेश के मां अहिल्याबाई की नगरी में जो इतिहास, परंपरा, संस्कृति, अध्यात्म और आधुनिकता सभी का एक संगम है, इस इंदौर में आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और हमें विश्वास है कि पिछले 2 दिनों में इस अतुल्य संगम का एहसास आपको जरूर हुआ होगा। एक लोकतंत्र में असली ताकत लोक माने जनता होती है और वैसे ही किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी माटी और उसके देश से सदैव होती है।
भारत के संदर्भ में एक पुरानी कहावत है, देयर इज एन एज ओल्ड एडिज that you can take an Indian out of India, but you can never take India out of any Indian. और भारत का कोई भी सपूत, कोई भी पुत्र पुत्री विश्व के किसी भी कोने में रहे हों, वो भारत का सपूत पुत्र पुत्री कभी भी भारतीयता से जुदा नहीं हो सकता। और इसी सोच और विचार को भांपकर भारत के इतिहास में पहली बार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की थी। और उस समय से जब प्रवासी भारतीयों का एक अहम भूमिका रही, 1998 में जब भारत ने पहली बार पोखरण में परमाणु ब्लास्ट किए थे, और उस समय में जो अनेक देशों ने भारत के विरुद्ध सैंक्शन किए थे, अगर विश्व स्तर पर वो रुख बदलने का कार्य किसी ने किया था भारत के प्रति, तो हमारे प्रवासी भारतीयों ने जग जग में देश देश में किया था। और आज 21 साल बाद मेरे भाई और बहनों, जब 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाने जा रहे हैं, ये केवल एक तारीख तक सीमित नहीं है। इट इज नॉट लिमिटेड टू एन इवेंट, इट इज नॉट लिमिटेड टू अ डेट। लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, इसी संबंध को एक वैश्विक और एक नई सोच और विचारधारा और एक नई रिश्ता और एक नई रूप देने के लिए संकल्पित रूप से उन्होंने कार्य किया है। और एक सेतु का स्थान हमारे प्रवासी भारतीयों को सशक्त करने के लिए उनकी अहमियत और उनकी कोशिश और उनकी पूर्ण कोशिश रही। और इसके आधार पर जब हम आज देखें कि भारत का छाप हमारे प्रवासी भारतीयों ने कहां नहीं छोड़ा है, चाहे हम कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन देखें, चाहे हम देश के नेतृत्व करने वाले लोगों को देखें, चाहे हम विशेषज्ञों को देखें, चाहे हम एक एक सेक्टर में डॉक्टर्स इंजीनियर्स को देखें, चाहे यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हों, चाहे हमारे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला हों, चाहे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हों, चाहे आयरलैंड के राष्ट्रपति लियो वार्डकार जी हों, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि भारत और भारतीयों को उभारने का काम प्रवासी भारतीयों ने किया है। और अकेले नहीं, अपने साथ पूरे विश्व को उठाने का कार्य भी हमारे प्रवासी भारतीयों ने किया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि भारत की जनसंख्या केवल 135 करोड़ तक सीमित नहीं है। भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है, जिसमें 3 करोड़ हमारे प्रवासी भारतीयों की जनसंख्या है। आपकी भागीदारी भारत को विकसित बनाने के लिए अनिवार्य है। आपकी भागीदारी और आपकी साझेदारी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनिवार्य है। और इसी दृश्य के पीछे एक शिल्पकार अगर रहा है इस देश में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपनी सोच और विचारधारा के साथ और विदेश नीति जयशंकर जी के साथ सारे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों के साथ बनाकर हमारे प्रवासी भारतीयों को एक नया सम्मान का स्थान बनाने का संकल्प लिया है। और इसी के फलस्वरूप चाहे यूके में हम देखें, पिछले बार जब बैठक हुई थी, हर साल ये तय किया गया कि 3000 भारत के हमारे विद्यार्थियों को वर्क वीजा यूके में दिया जाएगा। जब पहले बार कोविड आया, वैश्विक महामारी आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाड़ी देशों के सभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों को फोन करके हमारे
सारे प्रवासी भारतीयों को उस क्षेत्र में उनका हालत और उनकी स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करवाई। और अभी जब यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई हुई, प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन गंगा के आधार पर 23,000 प्रवासी हमारे स्टूडेंट्स को वापस घर लाने की पहल लगाकर उनको संगठित और सुरक्षित रूप से घर लाने का कार्य किया। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमारे प्रवासी भारतीयों का सुरक्षा, उनकी सहूलियत और उनकी समृद्धि, ये 3 पॉइंटेड कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। भले हमारे प्रवासी भाई और बहन देश में न रह रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उनकी सरकार के दिल में सदैव रहते हैं, ये विश्वास आपको हम दिलाना चाहते हैं। सदैव हमारे प्रवासी भारतीयों ने भारत का सहयोग किया है, भारत के विकास में सहयोग दिया है। 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे विश्व में आई थी, उस समय जो रेमिटेंस देश में एक एक प्रवासी भारतीय ने भेजा था, आज हमारे जीडीपी का भाग का 3.5% हो चुका है। और मैं विटनेस हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को भेजा था यूक्रेन और रूस से हमारे विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए, हमारे एक एक प्रवासी भारतीय ने, मुझे रोमानिया भेजा गया था, वहां बैठकर न दिन देखा न रात देखा, सेवा भाव के आधार पर कोई गाड़ी चला रहा है, कोई टेंट लगा रहा है, कोई खाने पका रहा है। हमारे एक एक विद्यार्थी को लाने के लिए दिन रात हमारे प्रवासी भारतीयों ने कार्य किया। तो आज आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपको मैं सलाम करता हूं। आज के दिवस पर प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, और विश्व में यह ऐलान हो चुका है कि भारत के बिना विश्व आगे नहीं बढ़ सकता। और विश्व की एकीकरण के लिए प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है, जहां एक तरफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, जिस कार्यक्रम में बोरिस जॉनसन जी तत्कालीन राष्ट्रपति यूके के, उन्होंने कहा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एंड वन मोदी। जिस प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भारत आज विश्व पटल पर उजागर हो रहा है मेरे भाई और बहनों। और वो G20 की अध्यक्षता किस सोच और विचारधारा के साथ? वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वासुदेव कुटुंबक की सोच, पूरा विश्व एक परिवार है। आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में, जो 2013-14 में भारत आर्थिक स्थिति में विश्व में 13 नंबर की शक्ति थी, आज भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में बन चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और 2030 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जर्मनी और जापान से भी आगे निकलकर मेरे भाई और बहनों। तो आज के इस दिवस पर आप सब लोगों से निवेदन है कि भारत की इंडियन ग्रोथ स्टोरी में भागीदार बने, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को मजबूत करें, अपने जन्मभूमि से जुड़े रहें, और हमारे युवाओं को जो बाहर, देश के बाहर कार्य कर रहे हैं, मेरा एक ही मंत्र है, एक ही संदेश है, LER, लर्न, अर्न, learn, earn and do return. Learn, earn and do return, because your destiny is here with Mother India. मुझे विश्वास है कि आपकी भागीदारी के साथ भारत की यह सदी होगी। इसी भावना के साथ भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। अपने ऐतिहासिक कार्यकाल में मध्य प्रदेश का चेहरा बदल देने वाले
न्यू इंडिया की विकास गति के साथ साथ मध्य प्रदेश का हर कदम बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से हमारा निवेदन है कि कृपया सभा को संबोधित करें। नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश विल एड्रेस द गैदरिंग। भारत माता की, भारत माता की। भारत की महामहिम राष्ट्रपति, हमारे देश की गौरव माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुयाना के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, सूरीनाम के महामहिम राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, मध्य प्रदेश के कर्मठ गवर्नर आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, हमारे प्रिय विदेश मंत्री, कल जिनका जन्मदिन भी हमने मनाया, तुम जियो हजारों साल, आदरणीय जयशंकर जी, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन जी, और मेरे प्रिय प्रवासी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, एक बार फिर मध्य प्रदेश का प्रणाम, इंदौर का प्रणाम और मामा का प्रणाम। यह दुर्लभ अवसर है, आज एक मंच पे 3 महामहिम राष्ट्रपति विराजमान हैं। एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए भारत के राष्ट्रपति जी का, गुयाना के राष्ट्रपति जी का, सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का। मेरा मन आज भाव विभोर है, आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है, लेकिन दिल के किसी कोने में गंभीर उदासी भी छा रही है। 3 दिन तक आपका साथ रहा, इंदौर आपसे एक रूप हो गया। सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की जैसे बेटी की शादी की तैयारी करते हैं। अपनी बेटी की शादी जैसा इंदौर का स्वागत, सत्कार। लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो फिर मन में तकलीफ भी होती है। 3 दिन आनंद के, उत्सव के, उमंग के 3 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। और अब मन सोच के भारी हो रहा है कि आप चले जाओगे। अरे यहीं रह जाओ ना, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कल मैं गया था पधारो मारे घर कार्यक्रम में, होम स्टे, वहां संस्मरण सुना रहे थे। एक बहन ने सुना कि पहले तो मैं डर रही थी, दूसरे घर कैसे जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन उस घर में रह के उस घर की हो गई। भाव विभोर थे प्रवासी हमारे सारे, और उनसे ज्यादा भाव विभोर थे मेहमान से ज्यादा मेजबान। ऐसे लगा कि 2 परिवार नहीं मिले हो, 2 देशों को जोड़ दिया हो। सचमुच में 3 दिन से सब तरफ इंदौर की चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही है, भारत की चर्चा हो रही है। और मैं सच कहता हूं, यह कार्यक्रम केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं था।
जयशंकर जी की टीम लगी थी, विदेश मंत्रालय, मध्य प्रदेश की टीम लगी थी, लेकिन इंदौर की जनता ने जी जान से जुड़ के ये कार्यक्रम किया। इंदौर की जनता ने, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे इंदौर स्वच्छता की राजधानी, इंदौर स्वाद की राजधानी, लेकिन मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं, इंदौर जन भागीदारी और जन सहभागिता की भी राजधानी है। और जाने के पहले हमने आपसे पेड़ लगवाए ग्लोबल गार्डन में, हर देश की प्रतिनिधियों ने पेड़ लगाया। आपको हमने प्रेम के बंधन से तो बांध ही था, पेड़ के बंधन से भी बांध लिया। ये पेड़ सदैव आपकी याद दिलाएंगे, और जिनने पेड़ लगाए उनको QR कोड भी हम दे रहे हैं। आप स्कैन करेंगे तो आपका लगाए हुआ पेड़ आपको दिखेगा। उस पेड़ को हम बढ़ाते रहेंगे, वो पेड़ आपको हमारी याद दिलाता रहेगा। आज और सच में जो प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया वसुधैव कुटुंबकम का, भारत का मंत्र है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण के साथ, विश्व का कल्याण तब होगा जब पर्यावरण बचे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत दिया है दुनिया को, इसलिए हमने भी पर्यावरण के लिए एक पेड़ लगवाया है आपसे। ये पेड़ हमें ये भी याद दिलाता रहेगा कि भारत का संदेश है, प्रधानमंत्री का संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये भारत का संदेश पूरे विश्व में फैलाइए। आज भारतीय समुदाय का कल्याण का काम करने वालों को महामहिम राष्ट्रपति पुरस्कृत करेंगी। उन सबको मैं बधाई देता हूं। आज सवेरे एक सत्र और हुआ था महिला उद्यमियों का राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका पर। आज मैं एक योजना जरूर आपको मध्य प्रदेश की बताना चाहूंगा, और वो योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। हम बेटियों, हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो बेटियों की पूजन से, और मध्य प्रदेश में थोड़ा सेक्स रेशियो गड़बड़ा रहा था, बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी, तो हमने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, और उसमें तय कर दिया कि बेटी अगर पैदा होगी तो 30,000 रुपए के बचत पत्र उसके नाम से खरीद के हम रख लेंगे, और जब बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं और 12वीं में 6,000 रुपया और जैसे 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया और उसको मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, साइकिल निःशुल्क, और अब तो लाडली लक्ष्मी 2 में हमने जोड़ दिया है मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर एडमिशन हो जाएगा तो इस प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, उन बेटियों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा ही भरवाएगा, प्रदेश की सरकार भरवाएगी। महिला सशक्तिकरण के एक नए युग का प्रारंभ मध्य प्रदेश की धरती पर किया। और मैं एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट करंट प्राइस एज पे 19.76% है, देश में सबसे ज्यादा। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले 3.6% हुआ करता था, 4.6% है। और आज फूड बास्केट है मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का। गेहूं के उत्पादन में हमने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया। एक नहीं अनेकों उपलब्धियां हैं, विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन अद्भुत राज्य मध्य प्रदेश। खेती के मामले में हमारा बासमती राइस, हमारा सरबती गेहूं, चिन्नौर चावल, ड्यूरम व्हीट, मध्य प्रदेश की अलग पहचान है। गुड गवर्नेंस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसलिए जाते जाते मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक के नाते आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूं।
मध्य प्रदेश को भूलना मत। भूलेंगे तो नहीं ना? एक तो निवेश में जो योगदान हो सकता है, कई लोग मुझसे मिले हैं, मैं तो कुछ लोगों को कह रहा हूं रुक जाओ, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है कल और परसों। कई लोगों ने बहुत अच्छे प्रस्ताव दिए। आप खुद भी निवेश कीजिए, और अगर आपको नहीं करना हो तो और कोई से भी करवाइए ना। अच्छा, हम में और आप में कोई दूरी नहीं है। हमने एक फ्रेंड्स ऑफ एमपी पोर्टल बनाया है। फ्रेंड्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के दोस्त बनिए ना। www.friendsofmp.gov.in पोर्टल है। आप पोर्टल पर प्रस्ताव भेजिए, तुरंत आपको रिस्पांस मिलेगा, देर नहीं लगेगी। मेरे प्रिय मित्रों, अगर निवेश नहीं करना हो तो जहां के हो आप, मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेश से भी, तो मेरी अपील है साल में एक बार जरूर अपने गांव या शहर आना। मध्य प्रदेश में हम गौरव दिवस मनाते हैं, तब जितने मध्य प्रदेश में उस गांव के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले हैं, उनको बुलाते हैं, और कोई ना कोई छोटा मोटा योगदान जरूर देना अपनी माटी के लिए, अपनी जड़ों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। और एक अपील और है, हमारे जो बेटा बेटी पढ़ रहे हैं, अब भारत में बहुत लोग पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी जाते हैं पढ़ने अलग अलग देशों में। आपके देश में उन बच्चों के लिए एक हेल्प डेस्क बना लेना। एक हेल्प डेस्क बन जाए, जो अगर कोई कठिनाई बच्चों को आए तो उनको सहयोग करे। और निवेश ना करो तो ना सही, मध्य प्रदेश घूमने जरूर आना और घूमने जरूर भेजना लोगों को। अभी भी घूम के ही जाना, एकदम मत चले जाना। महाकाल, महालोक, मांडवगढ़, महेश्वर, टाइगर रिजर्व और चीता देखने भी फरवरी में बुलाऊंगा आपको। फरवरी से हमें अलाउ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने नामीबिया से चीता बुलाए, दक्षिण अफ्रीका की चीता और आने वाले हैं। एशिया महाद्वीप में खत्म हो गए थे, अब मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर में आ गए। मेरे बहनों और भाइयों, ये सचमुच में ऐतिहासिक अवसर है। समिट के अलावा भी मध्य प्रदेश आते रहें। और अब कहते हुए मन भारी है, लेकिन विदाई की बेला आ गई है। इंदौर की यादों को लेकर विदा, मध्य प्रदेश की पावन स्मृतियों को लेकर विदा, हृदय में हमारे प्रेम को लेकर विदा। जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे। तुम बिन लागेगा कन्वेंशन सेंटर सूना, तुम बिन लागेगा राजवाड़ा सूना सूना, तुम बिन लागेगी 56 दुकान सूनी सूनी, और तुम बिन लागेगा सराफा सूना सूना, तुम बिन लागेगा इंदौर सूना सूना, और तुम बिन लागेगा हृदय घट सूना सूना। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और अंत में अगर कसर तो नहीं छोड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ऐसी थी कि हाल छोटा पड़ गया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, अगर कोई असुविधा हुई तो दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। हमारे प्यार को हृदय में रख के जाइए और हमें क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। एक धागा है जो हम सबको बांधे रखता है, वो है हिंदुस्तानियत का धागा।
एक रंग है जो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, वो है हिंदुस्तानियत का गहरा रंग, और यही है हमारा सच्चा रंग, यही है हमारा पक्का रंग। भारत माता की ऊर्जा, क्षमता और संस्कृति की सार्थकता से पूरी दुनिया को रूबरू करा रहे हैं हमारे प्रवासी भारतीय, और जहाँ पर वो हैं वहाँ के समाज, वहाँ की संस्कृति को भी अपनापन दे रहे हैं। विदेशों में विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रवासी भारतीयों को अब माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। May I request the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, to kindly present the Pravasi Bharatiya Samman Awards 2023. Professor Jagdish Chennupati from Australia in the field of science, technology and education. जोरदार तालियों से हमारे प्रवासी भारतीयों का सम्मान करें। Professor Sanjeev Mehta from Bhutan in the field of education. Professor Dilip Launto from Brazil, Art, Culture, Education. तालियां आपकी शुभकामनाओं की तरह हैं, इन्हें देते रहिए। Dr. Alexander Mariakel John from Brunei in the field of medicine. Dr. Vaikuntham Iyer Lakshmanan from Canada in the field of community welfare. Mr. Joginder Singh Nijjar from Croatia, Art, Culture, Education. Professor Ramji Prasad from Denmark in the field of information technology. Dr. Kannan Ambalam from Ethiopia in the field of community welfare. Dr. Amar Kumar Mukhopadhyay, Germany, Community Welfare, Medicine. Now, ladies and gentlemen, His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali, Guyana, Politics, Community Welfare. Ms. Reena Vinod Pushkarna from Israel, Business, Community Welfare.
Dr. Maksuda Sarfi Shiodani from Japan in the field of education. Dr. Raja Gopal from Mexico in the field of education. Mr. Amit Kailash Chandra Lath from Poland, Business Community Welfare. Mr. Parmanand Sukumal Daswani from Republic of Congo, Community Welfare. Mr. Piyush Gupta from Singapore in the field of business. Mr. Mohanlal Hira from South Africa, Community Welfare. Mr. Sanjay Kumar Shivabhai Patel from South Sudan in the field of business community welfare. Mr. Sivakumar Nadesan from Sri Lanka, community welfare. Dr. Devun Chandrebose Sarman, Suriname, community welfare. Dr. Archana Sharma from Switzerland in the field of science and technology. Justice Frank Arthur Sri Prasad, Trinidad and Tobago, community welfare, education. Mr. Siddharth Balachandran from UAE, business community welfare. Mr. Chandrakant Babubhai Patel from UK in the field of media. Dr. Darshan Singh Dhaliwal from USA, business community welfare. Mr. Ashok
Kumar Tiwari from Uzbekistan in the field of business. Thank you so much, Honorable President, and heartiest congratulations to all the award winners. बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया. And now may I call upon the awardee, one of the awardees, Dr. Archana Sharma, to render the acceptance speech. Please. Namaskar. The Honorable President Murmu, Honorable Minister Jaishankar, Ministers of State, fellow awardees, distinguished guests. सबसे पहले तो तहे दिल स्वागत के लिए इंदौर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद. I bring to you very warm regards, not only from my Karm Bhumi, Switzerland, but also from the world as a scientist. Madam President, we are profoundly humbled and deeply honored to receive this award bestowed upon us from the Government of India. Coming from all corners of the world, this gathering represents a vivid range of countries and backgrounds. With the recognition given today to those of us who have made contributions in several diverse fields, ranging from civil society, government, to sciences, we sincerely thank the people of India and the Indian government for this generous gesture. This award is a testament to our commitment and dedication towards making positive contributions. It also serves as an inspiration to us as we continue striving to make a lasting impact on society. In each of the societies in which we live, we have worked together to promote peace and development for all citizens, regardless of ethnicity or background. This has emerged from our strong Indian roots and our commitment to the philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Together, we have recognized our mutual need for respect, understanding, cooperation in order to build a better world for everyone. Our efforts have fostered strong national bonds that recognize diverse identities while maintaining the unity of our people in pursuit of a common goal, a better future for all. We are united by a commitment to justice and fairness, striving towards progress through collective action and support for one another. We have emerged as a nation that the world looks up to for solutions and dialogue. We are now leading the world with our presidency of the G20. We are contributing to an effective dialogue for and with the global South. This moment is history, and it is a paradigm-shifting moment. It is a moment of great pride, great honor, because as we speak for India, we not only speak for ourselves, we are the voice of the entire post-colonial developing world. And with the much pride and honor, this is also a moment of great responsibility. The deliberation that the future belongs to India, a debate that emerged at the turn of the century, has become a fact, that the future is India. In the words of Louis Pasteur, the future will belong to those who have done the most for the sake of suffering humanity. The compassion of India, rooted in our ancient and diverse culture, has brought this leadership to India, not only because India has served, but also because India has been resilient and has endured. I remember Prime Minister exhorting that science and technology can remove national barriers, unify the world, and advance peace. This is a message of optimism for science and a message of hope for the world. Children born into the world today are brought up in a time of promise and optimism. They have been gifted with something invaluable, and that's science.
an immeasurable resource that we can use to propel not only our great nation, but the entire developing world forward and become global leaders. Science presents us with a vast, boundless realm of possibilities where ideas can be cultivated and progress made. It is only by embracing this new frontier that we will be able to break free from archaic ways of thinking and move towards a brighter future for India and for the world. Our unique sense of modernity, which is unlike that of any other nation in the world, draws its strength from both our ancient culture and the vigor and dynamism of science. We take pride in our ability to embrace the core truth of reality and are not afraid to explore it with an open mind. Our culture has instilled in us such precious values that have enabled us to create a balance between tradition and modernity. This combination has allowed us to be at par with other nations of the world while still retaining our own identity. We continue to strive towards progress while staying rooted in our culture. My mentor and Nobel laureate George Sharpak used to say, "Si on veut faire quelque chose, il faut donc s'occuper de l'éducation." If we want to do something, we must deal with education. I am so glad to note that education in India is being remodeled with the new Science, Technology and Innovation Policy, the National Education Policy, and support to engage with science, technology, industry, and education is an immense effort that our Honorable Prime Minister has dedicatedly put forward, and this definitely would lead to sustained development. As I close this, on behalf of all the Pravasi Bharatiya Samman awardees of 2023, I am reminded of the Rig Vedic verse, "Yatra Vishwam Bhavyati Ek Niram." Where the world meets is one nest. This is our nest, and the world is meeting us here. Namaste, Jai Hind. बहुत-बहुत धन्यवाद आपका. And may I now call upon all the award recipients to kindly come up onto the stage for the photo op with the Honorable President and our esteemed guests on the dais. कृपया ग्रुप फोटो के लिए मंच पर पधारें. सबसे पहले 2023 के जो अवॉर्डीज हैं उनका फोटो ऑप होगा और उसके बाद 2021 के अवॉर्डीज मंच पर पधारेंगे. और इसके बाद 21 के अवॉर्डीज तैयार रहें. These are the memorable moments जो कभी भूलने नहीं वाले हैं और हृदय में कैद होने के साथ साथ अब कैमरे में भी कैद हो रहे हैं. Awardees for 2023. जोरदार तालियां सभी अवॉर्डीज के लिए, प्रवासी भारतीयों के लिए. और अब 21 के अवॉर्डीज मंच पर पधारेंगे फोटो ऑप के लिए. ये 2021 के अवार्ड विनर्स हैं. आप लोग यथास्थान जहां पर आप अपनी अपनी जगह है वहां पर खड़े हो जाइए और माननीय राष्ट्रपति महोदया और सभी एस्टीम्ड डिग्निटरीज हमारे बीच मौजूद हैं.
ये स्मृतियाँ हमेशा के लिए संजो के अब जहाँ भी रहते हैं उस देश, उस शहर लेकर ये जाएंगे। Thank you so much. Thank you. सुनहरी यादें जो कैमरे में कैद हैं, उन्हें ये अपने घर में सजाएंगे. And today, we are deeply overwhelmed by the gracious presence of the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. हम माननीय आज अभिभूत हैं. आज आपकी अत्यंत गरिमामय उपस्थिति हम सबका उत्साह वर्धन कर रही है. माननीय, हमारी करबद्ध प्रार्थना है आपसे कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको प्रेरणा दें. बस जोरदार तालियां माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए. His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana, His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname, Sri Mangu Bhai Patel, Governor of Madhya Pradesh, Sri Shivraj Singh Chauhan, Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. S. Jaishankar, Union Minister of External Affairs, Sri Jyotiraj Scindia, Union Minister of Civil Aviation, Sri V. Muralidharan, Union Minister of State for External Affairs, distinguished guests and delegates, ladies and gentlemen, Namaskar. I am delighted to be present at the 70th Pravasi Bharatiya Divas Convention and deliver the valedictory address. I am very pleased to meet you all personally, especially because this convention is being held physically after a long interval of 4 years. I take this opportunity to wish you all a happy and productive new year. I am pleased to welcome His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana, as the chief guest in this year's convention. He has his roots in Bihar, and his presence has made this event even more special. I also welcome His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname, who was our chief guest at the 16th Pravasi Bharatiya Divas, which had to be held virtually due to the pandemic. I am also happy to note that one of the youngest Indian diaspora leaders, Ms. Jatena Mas Karen Haas, Member of Parliament Australia, has also participated in the convention as guest of honor for the Youth Pravasi Bharatiya Divas. Ladies and gentlemen, the Indian diaspora today has become an important and unique force in the global system. It has grown into an energetic and confident community in every region and is making sheltered contributions to world affairs in leadership positions. Our diaspora has exhibited extraordinary dedication and hard work and has overcome many challenges to achieve excellence in all walks of life, including art, literature, politics, sports, business, academics, philanthropy, science and technology. Your achievements give us immense pride and joy.
The Pravasi Bharatiya Samman Awards symbolize the nation's highest recognition of the diaspora members for their contributions to India and in their home countries. These awards are significant as they not only show our appreciation and acknowledgement of the achievements of the Pravasis, but also reflect our faith in their resolve to keep India's flag flying high in the world. Our previous awardees have continued to achieve greater heights and win praise for their good work even after receiving the Pravasi Bharatiya Samman. I congratulate this year's winners and hope that these awards will encourage you to scale even greater heights in the future. Over the last 2 decades, the Pravasi Bharatiya Divas Convention has served as a unique platform to enable fruitful engagement between government, people of India, and the diaspora. We started this tradition of celebrating our bonds with the diaspora on 9th January to mark the day when Mahatma Gandhi, a pioneer among Pravasis, embarked upon the revival of Indians' freedom movement against colonial rule on returning to India. Ladies and gentlemen, as you all know, the nation is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav on completion of 75 years of independence. These celebrations are dedicated to those who have played a key role in India's progress up to the present times, and also to those who are instrumental in realizing our vision of Atmanirbhar Bharat. Therefore, there could not have been a better time to commemorate contributions made by the Indian diaspora. The theme of this year's convention, Diaspora, Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kaal, also reflects our desire to make you a partner in the achievements of our national developmental goals. In recent years, the government has undertaken several initiatives for the benefit of our diaspora. These are not only aimed towards welfare of those residential abroad, but also towards enabling you all to engage in the tasks of nation building. The overseas citizen of India and person of Indian origin card scheme have been merged, and the visas for the OCI cardholders have been made lifelong. We are also taking steps to enhance safe, orderly, and ethical legal migration of Indian youth for overseas employment. Now, digital platforms are being used to address grievances and to help distressed Indian nationals, especially women and migrant workers. We have also undertaken massive evacuation exercise to repatriate India's and Pravasis from crisis situations, including most recently in Operation Ganga in Ukraine. Your ideas and suggestions presented during the thematic discussions over the last 3 days will be immensely valuable in charting the path ahead. The plenary session discussing women diaspora entrepreneurs is particularly notable, as it shows the potential of our sister entrepreneurs and business women in the diaspora in shaping the entrepreneurial spirit of our women in all sectors of the economy here in India. In addition, our young diaspora achievers can play a significant role in fostering the spirit of innovation and development of new technologies among the youth of India. Ladies and gentlemen, we are facing challenging times today,
with economic and geopolitical upheaval all around us. Amid all these challenges, India is engaging with the world with greater self-confidence and a wider goal of securing national interest. This can be seen in our strong relations with all major countries and our leadership on various global platforms. As you know, India is presiding over the G20 this year with the theme One Earth, One Family, One Future. This theme, inspired by our ancient philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, reflects India's commitment to just and equitable growth for all in the world. In the next 25 years, India is going to embark on an ambitious journey of collective hard work, sacrifice, and intensive development to transform into a self-reliant world leader by 2047, when we will be celebrating the centenary of our independence. Your collective power and potential will be a force multiplier in the nation's inclusive development. I invite each and every member of our diaspora family to become a full partner in this journey. You can contribute with your energy, your experience, your ideas, your business acumen, your investments, your technical expertise and knowledge sharing to enhance our capabilities and capacities to fulfill the vision of an Atmanirbhar Bharat. The call of the soil of the motherland is something that transcends the barriers of time and distance. While you have built enriching and productive lives in your adopted homes in different corners of the world, our diaspora brothers and sisters will always hold a special place in our hearts, not only as extended family members, but as responsible stakeholders in India's development. I once again convey my best wishes to the distinguished gathering here and wish you all a happy and prosperous years ahead. Thank you. Jai Hind. Thank you, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. I now invite Honorable Minister of State for External Affairs, Shri V. Muralidharan, to kindly propose words of thanks. Kripya आभार प्रकट करें. Namaskaram and good evening to everyone. It's my privilege to propose the vote of thanks at this valedictory session of the 17th Pravasi Bharatiya Divas Convention. I express my sincere gratitude to Honorable Rashtrapati ji for sparing her valuable time and joining us today and delivering a truly inspiring valedictory address and highlighting how India envisions a multifaceted and enduring relationship with its diaspora. My congratulations to the PBSA winners who have received their awards from Rashtrapati ji. It is said that well begun is half done. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji inaugurating the event yesterday and his inspirational address set the positive tone for the PBD. I express my sincere thanks to Honorable Prime Minister for being a motivational force for furthering our connection with the diaspora and sharing his vision for Atmanirbhar Bharat during this Amrit Kaal. I express my deep appreciation to the Chief Guest, His Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali, President of Guyana, for joining us. His presence has been an inspiration to this convention and all our diaspora participants. I also extend my warm gratitude to the special guest of honor, His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, President of Suriname. His presence highlights the strong and enduring relations between Suriname and India.
I'm grateful to the participation of Ms. Zeneta Mascarenas, Member of Parliament, Australia, for being the guest of honor for Youth Pravasi Bharatiya Divas. I also thank the Honorable Foreign Minister from Panama and Suriname, ministers from Mauritius, Malaysia, Zimbabwe, Sri Lanka, Suriname and Guyana, and other esteemed guests at this PBD for their gracious presence. I am grateful to our Honorable Minister for External Affairs, Dr. S. Jaishankar ji, for providing guidance and encouragement at every step. His vision and ambition to involve diaspora in nation's development are noteworthy. I thank Honorable Governor of Madhya Pradesh, Shri Mangubai Patel ji, for his gracious presence here and his leadership for the PBD. I am deeply thankful to the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, for his leadership in successful conduct of this PBD. We have been able to witness the warm and effusive hospitality of the people of Madhya Pradesh under your leadership. I thank Srimati Nirmala Sitharaman ji, Minister of Finance, Dr. Mansukh Mandavia ji, Minister of Health, Shri Dharmendra Pradhan ji, Minister of Education, Skill Development and Entrepreneurship, and Shri Jyotiraditya Scindia ji, who is present here, the Minister of Civil Aviation, for significant contributions, including in the plenary sessions. I also thank my colleagues, Srimati Meenakshi Lekhi ji and Dr. Rajkumar Ranjan Singh ji, for their excellent contributions in plenary sessions. I express my gratitude to Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji, for his valuable contribution at the Youth Pravasi Bharatiya Divas. I place my appreciation for the lively cultural performances by the cultural troops and for the exceptional digital exhibition put together for the first time on the contribution of diaspora in India's freedom struggle. It's an excellent tribute to our overseas freedom heroes. I thank all the diaspora members and our guests who have come here from different parts of the world and for their enthusiastic participation. I am sure there are many who have contributed for the success of this PBD, but for want of time, I am unable to mention every name, but I thank everyone involved. With this, I conclude and wish you all a very happy new year and a pleasant stay in India. Thank you all. Thank you so much, sir. आप सभी से निवेदन है कि कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया. Thank you, His Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali, President of Cooperative Republic of Guyana. Thank you, His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname. Thank you, their esteemed dignitaries on the dais. May I request you all.